कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो वी आर बैक विद द पोएट्री इन फ्लेमिंगो। वी आर बैक विद द फिफ्थ पोएट्री इन फ्लेमिंगो जिसका नाम है आर्न जेनिफर टाइगर। सो ये पोएट्री दोस्तों इट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग एक्चुअली, जिसमें एक तरफ जो ऑथर है उन्होंने पोर्ट्रे किया आर्न जेनिफर को, जो कि बहुत ही बॉग डाउन है बाय द मैरिज दैट शी हैड एंड बाय द सर्कमस्टेंसेस दैट शी हैड फेस्ड इन हर लाइफ। और दूसरी तरफ जो वो पेंटिंग कर रही थी वो एक टाइगर की पेंटिंग करती हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ ऑथर ने उस टाइगर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इट रिफ्लेक्ट्स शाइवलरी, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रीनेस। बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करी हैं जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है टू व्हाट द पेंटर वाज एक्चुअली फीलिंग इन अ लाइफ, राइट? सो इन ऑर्डर टू उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि दो शी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू इवन पेंट व्हाट शी वाज डूइंग, but still it echoed the spirit of a tiger in her, right? So ये चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। आइए इस पोएम को देखते हैं। पहले थोड़ा अबाउट द ऑथर। सो ऑथर इज एंड्रियना रिच, फॉर दिस पोएम। She lived in the period from 1929 to 2012, and she was an American poet. कुछ उनकी highlights of the key success in her lives, early success उनको मिली थी when her first book was selected by W.H. Auden for the prestigious Yale series of Younger Poets Prize. Then literary evolution, her early work was noted for its formal craft and modesty. However, as she experienced the constraints of traditional marriage and motherhood in 1950s and 60s, her style shifted towards free verse and more radical, politically engaged theme, right? So उनकी पोएट्री में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की गई है कि पहले उन्होंने काफ़ी एक फ्री पोएट की तरह वो अपनी पोएम्स लिखती थी, ऑथर अपनी कहानियाँ लिखती थी। बट आफ्टर द मैरिज दैट शी हैड इन एंड द चाइल्डहुड एंड द मदरहुड दैट शी एक्सपीरियंस इन 1950s and 60s, her style actually changed, right? Her style changed from फ्री वर्स एंड देन टू अ रेडिकली पॉलिटिकली एंगेज थीम्स में वो आने लग गई। सो उनका स्टाइल काफ़ी चेंज हुआ post what she experienced in her personal life, and that also gets reflected in the poem that we are discussing here. Okay, now just a summary of the poem. uh, in this, she explores the internal conflict of a woman trapped in the oppressive marriage. Aunt Jennifer creates a tapestry of vibrant, fearless tigers that prance with chivalric certainty. These tigers represent the strength and independence she lacks in her own life, right? So she was actually creating a tapestry, मतलब वो जैसे बुनना जिसे कहते हैं ना, टेपेस्ट्री जिसे कहते हैं कि आप एक क्लॉथ में कुछ वीव कर रहे हो, उसकी तरीके से शी वॉज डूइंग दैट। और उसमें वो एक बहुत ही फियरलेस टाइगर की पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, विच वॉज नॉट सिमिलर टू वॉट शी वॉज, राइट? वेरी ऑपोजिट टू वॉट शी वॉज एंड वॉट शी वॉज एक्सपीरियंस इन हर लाइफ। Prance with chivalric certainty, matlab that freeness, that chivalry that one has, right? So the experience that a tiger can give it to you, uska bilkul opposite is what the aunt was at that point of time. The poem highlights her physical and mental exhaustion through the symbol of uncle's wedding band, which sits with the massive weight upon her hand. Even after death, Aunt Jennifer remains mastered by her ordeals, but her art, the proud, the unafraid tigers, will live on, serving as an immortal expression of her suppressed spirit. So, it actually itni suppressed thing ho that she said that, even if she dies, then also somehow that ordeal, या जो orders of her husband would actually kind of, gain importance to her. So essentially she was so oppressed that even after that she won't be free. That's what she meant, by this line. और उन्होंने ये भी कहा कि अंकल, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है पोएम में, बट एक चीज़ मेंशन है, अंकल्स वेडिंग बैंड, जिसके 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 दबाव में वो थी, राइट? जिसके दबाव में उन्होंने अपने पूरे जीवन गुजार दिया, ये वो ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द टेक्स्ट and the stanza by stanza background. So I'll just read the stanza first and then give the important highlights of the stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green,
They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So essentially जो एम्ब्रॉयडरी करती है, जैसे आर्न जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denies of a world of green. So essentially उन्होंने एक टोपैज के बारे में बोला है, टाइगर्स आर कंपेयर टू द येलो जेमस्टोन टोपैज, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वो सिलाई करने की कोशिश कर रही हैं उसमें शी क्राफ्ट्स दैट दैट टाइगर एक्चुअली रन्स इज फियरलेस, और कैसे वो उस लश ग्रीन फॉरेस्ट का राजा है एंड ही वाज काइंड ऑफ ड्राइविंग थ्रू दैट, राइट? सो दैट्स व्हाट शी मींस. Tigers are compared to the yellow gemstone topaz. They are denizens, residents of the lush green forest that she is painting. Sleek, chivalric certainty. They move with confidence and honor. The word chivalric suggests a majestic, gentlemanly bravery that is completely opposite to Aunt Jennifer's timidity. So chivalry इसे भी कहते हैं कि जो gentleman feeling होती है. People who are considered gentlemen are considered very nice to women. वो शिवैलरी के अंदर ही आता है, वो एक क्वालिटी होती है. एंड द ऑथर सेज दैट स्लीक शिवैलिक सर्टेनिटी उसमें वो पेंट करने की कोशिश करती हैं, विच इज़ एक्चुअली जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट आर्ट वाज एक्सपीरियंसिंग एंड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ. ओके. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. So इसमें दो चीज़ कही है उन्होंने. सबसे पहले चीज़ क्या है, उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है. फिंगर्स फ्लटरिंग अगेन इट्स एन एलिटरेशन. एलिटरेशन वो चीज़ होती है जिसमें दो वर्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग की मतलब एक दो वर्ड्स जो एक तरीके की साउंड बनाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल फिंगर्स फ्लटरिंग, दिस एलिटरेशन हाईलाइट्स हर नर्वसनेस एंड फिजिकल वीकनेस. हर फिंगर्स वर फ्लटरिंग, शी वाज नॉट इवन एबल टू क्रिएट दैट टेपेस्ट्री दैट शी वॉज क्रिएटिंग. मतलब वो उसको वीव करने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी. एंड द पोएट सेज दैट दिस इज बिकॉज शी वॉज द मैसिव वेट ऑफ हर अंकल्स वेडिंग बैंड. मतलब जो वेडिंग बैंड उन्होंने उनके हस्बैंड ने उनको पहनाया हुआ था, उसके वेट के दबाव में, मतलब उस मैरिज के दबाव में शी वॉज सो ऑपरेस्ड दैट इवन शी वॉज नॉट एबल टू पेंट इन द वे दैट दैट वन शुड. सो ये सारी चीज़ उसमें वो बताने की कोशिश करती है. द आइवरी नीडल इज हार्ड टू पुल बिकॉज शी इज इमोशनली वेट डाउन, राइट? शी इज इमोशनली वेट डाउन एंड दैट्स वाई इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हर टू पुल द नीडल एंड ब्रिंग और क्रिएट दैट पिक्चर दैट शी वॉज क्रिएटिंग. The most important symbol here is uncle's wedding band. It is described as having a massive weight. Physically, a link is light, but metaphorically represents the heavy burden of her unhappy marriage. So metaphorically उन्होंने use किया है कि the weight of her marriage, that band is actually representing the weight of the heavy marriage that she was witnessing and the ordeals that she has faced. Note that this is called the uncle's band, suggesting he owns her, right? So it's he owns her, right? So like that. Let's look at the last stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she has mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. So he says that even when the aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, right? So मतलब इतना उनका डर था कि the author says that even if she dies, her terrified hands will be mastered by the orders that she was given. So इतना उनके ऊपर मतलब she was so oppressed by her marriage, in her marriage. The tigers in the panel she made will go on prancing proud and unafraid. So this is a poet's imagination, right? So इतना एक तरफ उन्होंने इतना ऑपरेशन दिखाया है कि aunt will even after that she can't come out of the orders of her husband, और एक उन्होंने एक ओपननेस दिखाया, एक फ्रीनेस दिखाया टाइगर्स में, wherein she says that the tigers in the panel that she has made will go on prancing proud. She would go on moving proud, being proud and majestic and unafraid, right? So दो completely opposite चीज को एक साथ दिखाने की कोशिश करी है उन्होंने इस पोएम में. The poet suggests that even that will not bring Aunt Jennifer's true freedom. Her hands will still be ringed upon, meaning both wearing the wedding ring and being surrounded by the hardships. This indicates that she was treated like a servant. Immortality of art, there is a bittersweet conclusion. While the creator dies defeated, her creation will live on.
The tigers represents her innate spirit, the part of her she wanted to be proud and unafraid. So this is a very important line, that the tigers represent her inner spirit, the part of her that wanted to be proud and unafraid. So it's her inner feeling that she was, crafting in the tapestry, right? वो एक क्राफ्ट करना चाह रही थी उस चीज़ को, जो उनकी एक इनर फीलिंग थी, विच वॉज अगेन प्राउड एंड टू रोम फ्रीली इन हर लाइफ, राइट? सो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, बट शी वॉज ट्राइंग टू पेंट हर इन द थिंग दैट शी वॉज पेंटिंग. सो just 2-3 core themes of the poem. The poem critiques a society where men dominates and women are forced into submissive roles. Jennifer cannot be brave in real life, so she creates bravery through her art. Embroidery is a silent protest. Human life is fragile and can be crushed, but the ideas expressed through arts are immortal. So again, these are just 2-3 themes. Kaise she is creating that art as a rebellion, and the transience of life as a permanence of art. So what you experience in life and the permanence of art that you are creating, how these two are two different things. How the art can be completely, you can put anything that you feel in the art, but you cannot experience anything you feel in life, right? So how she compares the two. So that's what she is trying to tell us. Okay, some of the symbols and the meanings. Chivalric shirts, there's a mistake. Chivalric certainty is again an alliteration, like fingers fluttering and prancing proud. And these, essentially, I have written the meanings of these 3 alliterations. So essentially, first में वो symbol पहले देखते हैं. Tiger क्या represent करता है? Symbolizes courage, freedom and the independent spirit that Aunt Jennifer lacks. Wedding band symbolizes the operational nature of marriage and male dominance. So essentially, हमको कैसे use करना है? Let's say if and these are the questions that can come as well, right? कि what does the tiger represent in the story, or what does the band represent in the story? So essentially उस feeling को लेना है, जैसे कि tiger represents freeness and courage and freedom, ये सारी चीज़ represent कर रहा है tiger, तो उस spirit को लेके आपको आंसर लिखना है. इसी तरीके से wedding band which represents symbolizes the oppressive nature of the marriage, उस ऑपरेसिव नेचर को लिख के आपको फिर 2-3 लाइन्स लिखनी होती है शॉर्ट आंसर में, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड द की सिंबल्स ऑफ वेरियस थिंग्स दैट आर स्टेटेड इन द पोएम. Topaz or green represents vitality, brilliance and the natural world of freedom. So there are 2 things. Some things would represent freedom, some things would represent courage, and the other things like the band and all these things would represent oppression and the operation nature of marriage and male dominance. Okay. Chivalric certainty, जैसे मैंने कहा था, associates with the wild nature of the tiger with the structured honor of a knight. Fingers fluttering and prancing proud creates a rhythmic contrast between the fear and bravery, right? Fear and bravery, right? How it creates a contrast between fear and bravery. So these are the 2 alliterations that are used here. Okay, कुछ key questions देख लेते हैं और इसको कैसे लिखना है ये भी देख लेते हैं. Like for example, question number 1, how do the denizens of the world of green describe the tigers? Describe them as bright topaz and chivalric. Mention that they are residents of the forest and are defined by their bravery and confidence, contrasting sharply with Aunt Jennifer's fear. Again, जैसे मैंने कहा था आपको कि 3-4 चीज़ें हैं, एक कैटेगरी में आएंगी, एक कैटेगरी में आएगी. जैसे डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जैसे टाइगर्स के बारे में बोला है उन्होंने, रेजिडेंट्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम इसमें लिखेंगे. देन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल फॉर आंट जेनिफर. दिस इजंट अ फिजिकल वेट बट अ मेंटल वन. Her fingers flutter because she is nervous and traumatized by her oppressive marriage. The massive weight of her marital responsibilities has drained her strength. So ivory क्या है इसमें? Hard to pull. Hard to pull मतलब इतना oppressed थी वो कि it was very hard for her to pull even the क्या कहते हैं, needle को weave करने में भी उनको problem हो रही थी because she was so oppressed, right? So ये जो चीज़ है हार्ड टू पुल फॉर आंट जेनिफर, ये हम इसी चीज़ में करेंगे बिकॉज द फिजिकल वेट इतना नहीं था उस नीडल का, बट द मेंटल थिंग्स दैट शी वाज फीलिंग इनसाइड was making her hard to pull even a needle, right? So that's what you would say. What is the significance of the word chivalric? Chivalry denotes honor, bravery and knightly courage,
By using this for the tigers, the poet shows that they possess the dignity and fearlessness that Aunt Jennifer has been denied. So same चीज़ है, essentially वो same चीज़ है कि क्या ये 3-4 चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है और कैसे वो ऑथर या जो मेन कैरेक्टर है आंट जेनिफर उससे कॉन्ट्रास्ट है. तो essentially यही चीज़ है. So contrast between Aunt Jennifer and the tigers, right? So इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें ना आई नो इट्स अगेन द सेम थिंग कि कैसे वो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द टाइगर दैट शी वॉज क्रिएटिंग एंड वॉट आंट जेनिफर वॉज फीलिंग, बट उसको ना आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि जैसे इसमें मैंने आंसर लिखा था, पोएम इज बिल्ट ऑन अ शार्प कॉन्ट्रास्ट. Aunt Jennifer is weak, terrified and fluttering, trapped in an unhappy marriage, symbolized by the heavy wedding band. In contrast, the tigers, she creates a proud, afraid and prancing. Tiger represents, जैसे ये वाली line है, the tiger represents her unfulfilled desires, the spirit of freedom and strength she wishes she had. While her physical body suppressed, her imagination creates a world of chivalric certainty. So tiger represents her unfulfilled desires, right? So क्या वो जो बनाना चाह रही हैं, it's an unfulfilled desire to experience that freedom that she wanted, right? So this is how you would mark it. First write about the tiger कि क्या वो डिनोट करते हैं एंड क्या वो मतलब क्या वो डिनोट करते हैं, क्या शिवलरी वो डिनोट करते हैं, क्या वो फ्रीडम डिनोट करते हैं, कैसे किंग ऑफ द जंगल वो अपने आप को कहते हैं वो डिनोट करते हैं. देन यू राइट अ कपल ऑफ थिंग्स अराउंड आंट कि आंट जेनिफर असेंशली क्या एक्सपीरियंस कर रही थी, क्या उनकी नेचर थी, क्या ऑपरेसिव में वो रह रही थी. एंड देन यू से दैट यू नो tigers are actually what she wants to be, right? So essentially then you write that. The wedding band is the central symbol of patriarchal oppression in the poem. Through a ring though a ring is physically light, Frost, this is wrong, this is the author, describes it as a massive weight that sits heavily on her hand. It represents the binding nature of a marriage where the woman is mastered by the man. It suggests that her identity has been completely submerged by the uncle to the point where her artistic work is her only remaining form of independent expression. So wedding band क्या represent करता है? Again मैंने कहा था wedding band represents the weight of marriage that she has on her. कैसे she has lost her freedom, कैसे because of the oppression that she has faced in a marriage she is not able to experience a lot of things that she wanted. So ये सारी चीज़ों को हम wedding band में लिखेंगे और then we would say that it suggests that her identity has been completely submerged by uncle to the point where her artistic work is her only remaining form of independent expression. कि सब कुछ submerge हो गया उनकी लाइफ में. The only thing that she is remaining is the artistry work by which she is actually painting what she feels like and what she wants to become. ये सारी चीज़ हम लिखेंगे इसमें. I hope this is interesting and informative. Do share your comments in the comment box. We would come up with more things on literature. So stay tuned.